So this is where we ended yesterday's session. So we'll continue from here. So we'll go to the next slide. So this slide pe I'll show you a couple of statements one by one. You have to identify whether the statement presents a necessary condition or a sufficient condition. So you have to see, is the statement presenting a necessary condition or is the statement presenting a sufficient condition? So whatever you decide, and then you have to also tell me कि अगर necessary है तो what is necessary for what, and if it is a sufficient condition, then what is sufficient for what. You can share your answers in the chat window. Okay, so Manvi, you're saying necessary. So what is necessary for what here? So you can just type it out, and others can also share their answers in the chat window. What about others? Statement presenting a necessary condition or a sufficient condition? Okay, so there is a direct message here. I think it's necessary. Condition is only those who have been influenced. Right, so it's presenting a necessary condition. The condition is you have to be influenced by the subject to influence the subject. So being influenced by the subject is a necessary condition to influence the subject. Yeah, AG. Abhirup, you want to ask something? Yes, CJ. Yeah. So इसमें like I was sort of stuck. Isn't it like a it's like nothing like a round robin? I think there's a official question जहाँ पे एक output तभी हो पाएगा जब कुछ होगा. So here, like for example, the output is influence a subject to get like to influence a subject. One needs to be influenced. So well, I'm just trying to think कि it's like the isn't it like the chicken egg scenario wherein पहला कौन सा हो रहा है? I was just trying to understand. पहले तो इन्फ्लुएंस हो गए तुम, उसके बाद इन्फ्लुएंस कर पाओगे. ये लिखा हुआ है कि being influenced is a necessary condition to influence. तो ये पहले होगा, उसके बाद ही इन्फ्लुएंस हो पाएगा. अच्छा एक मिनट. Only those who have been influenced, okay, can influence the subject. Okay, अच्छा. Yeah, I was trying to kind of wrap my head around. Yeah, maybe like I thought that it goes into a round and round fashion, but I think it makes sense now. देखो राउंड एंड राउंड वाले होते हैं,
if you come across something, we can talk about it. But there are cases in which we have that confusion, the way it is stated. So उसमें you have to see logically, chronologically, which has to appear first. यहाँ पे तो there is no such confusion. Chronologically also, you have to be influenced first, and then you can influence the subject. So, and that is how it is written. So it is all fine. Okay, makes sense. In some cases, logically the statement could be conveying something, but then you sort of try to understand, okay, chronologically, this is how the sequence should be. But let's not get there right now. If you have a case, then we can talk about it. Sure, absolutely. Thank you. Yep. So again, in this statement, you have to tell me whether it's presenting a necessary condition or a sufficient condition. And then whatever you say, then what is necessary for what, or what is sufficient for what. Right. So here it is. Great power is a sufficient condition. So anybody who has great power has great responsibility. So having great power is sufficient. So whoever has great power will have great responsibility. That is the meaning of this statement. ठीक है. Any doubts on this slide? Sorry. ठीक है. Let's move on. So this is our second official question. So one official question we discussed last time. So this has 4 options, and some of the options are picked from the official question. Some may have been modified by me. Okay, so there are multiple answers possible. There can be just one answer, or there may be multiple answers. So you have to remain open to that possibility. So accordingly, mark your answer. You have the option to select multiple answers there. So take your time, take about 2.5 to 3 minutes. So take your time, aram se karo, and select the options.
We'll end the poll in 15 seconds. Okay, ending the poll now. Can anybody explain me the passage? Who would like to? Do we have some volunteers here? Can you raise your hand if you'd like to explain me the passage? Anybody? You'd like to volunteer to explain me the passage? Please raise your hand. Or you can directly unmute yourself. No volunteers. So then I'll cold call. So Aman, would you like to explain? हाँ सर, हाँ मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था तो मैंने पूरी ध्यान से तो इतना देख नहीं पाया था, बट फ्रॉम व्हाट आई कुड गैदर फ्रॉम अ क्विक दिस ओवरव्यू यही था कि फॉर अ ट्रेड एम्बार्गो देयर इज necessary condition which is blockade. Total blockade is necessary for the trade, for a successful trade embargo. Right. तो ये statement, sorry. So that's a necessary condition. हाँ, तो ये second statement की बात कर रहे हो. The जी second जी. thing कि blockade is necessary for embargo. ठीक है. और उसमें ये भी लिखा था फर्स्ट पार्ट में कि दो फ्रॉम व्हाट आई कुड इंटरप्रेट इज कि दो चीजों की जरूरत है, एक तो है इंटरनेशनल अकॉर्ड और दूसरा ये एबिलिटी टू प्रिवेंट गुड्स फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग द कंट्री व्हिच हैज टू बी प्लेस्ड अंडर एम्बार्गो. ये दो चीजों की जरूरत है. क्या इन दो के अलावा और किसी की जरूरत हो सकती है? पॉसिबली हो सकती है, ये बट दोनों एटलीस्ट मतलब पैसेज डजंट सीम टू सजेस्ट मी कि दीज आर एक्सक्लूसिव. ठीक है. तो एक तो हो सकता है कि कुछ और भी जरूरत हो सकती है. वी डोंट नो. और ये दोनों नेसेसरी हैं. At a high degree of both international accord and नहीं, I don't think they are necessary. Why do you think so? कि Because this, उसमें I may be wrong, उसमें मुझे कोई ऐसा कोई वो एक कोई strong या word नहीं दिख रहा जैसे must या only, ठीक है. ठीक है. तो जिससे कि आपको मैं इन्फर कर पाऊँ कि ये एक necessary condition है instead of a sufficient condition. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि हाँ वो कह रहा है कि ये चीजें चाहिए बट दीज आर नॉट नेसेसरी. राइट. जी. ठीक है. श्योर. थैंक यू. व्हाट अबाउट अदर्स? is what do you think about the first statement? Is that presenting a necessary condition or not? Yeah, Abiru. I think the first statement talks about because it talks about must be sustained. Right. But I think that's a for yeah, it is a necessary condition. Yeah, it's a must be sustained. हाँ. First statement is present. So Aman, so it must लिखा हुआ है. आप कह रहे थे must नहीं है. So Right. must. हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि these two are necessary condition, a high degree of international accord and a high degree of ability to prevent goods from entering or leaving their country. These two are necessary conditions for a trade embargo to succeed. Can there be a third condition? Abiru? Yes, just give me a second. Let me think through it. There could be a third one, but it cannot be sufficient. So there could be a third necessary condition, right? Yes. तो ये दोनों तो necessary हैं ही हैं. So you are right कि third sufficient नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों necessary तो हैं ही हैं. Right? Right. Yeah.
but there could be a third necessary condition, we don't know, right? That's correct. Yeah, that's what I think. So let's say if somebody says that we have satisfied these two conditions, can we be sure that the embargo is going to succeed in that case? 22. Or there could be a third condition which might have not got, like these two might have got satisfied, but let's say some other third condition might have not got satisfied, so we cannot say that. So just because two necessary conditions have been satisfied, we cannot say that definitely this will be successful, Yes. right? So that is why C is wrong. Did you mark C? No, I didn't. I just marked B, but I was very unsure. So yeah, so that's why C is not the answer, because it's saying the trade embargo will be successful if these two conditions are satisfied, or a total blockade, which is let's say a third condition. But in any case, all these three are necessary conditions. We are not given anything whether these are the only necessary conditions or whether there are other conditions. So we cannot assume, oh, these are the only three conditions. We don't know. So we cannot say that the trade embargo will be successful. So this is not correct. Option D is correct because that is already given in the first statement. Option A, nobody marked. So it is essentially saying if this is satisfied, this is likely to succeed. So it's again talking in terms of a sufficient condition, not given. Option B is wrong because it's saying international opinion must be unanimous. Unanimous means there is no disagreement. But all we need is a high degree of international accord. We don't need, it's saying must be. We don't need unanimity. Unanimity means everybody is on the same page. We don't need unanimity. We just need a high degree of international accord. Any other reason why option B is wrong? Anybody else knows any other reason why option B is wrong? Is it because of the last sentence? A total blockade of Patria's port is necessary to an embargo. Yeah, so the option B is talking about for a blockade, this is necessary. Right? If for a blockade to be successful, this must be unanimous. We know that this blockade is necessary to an embargo. We don't know anything what is necessary for a blockade. Are we given anything? What is necessary for a blockade to be successful? Are we given anything about what is necessary for a blockade to be successful? We are given about embargo. For an embargo, blockade is necessary. But what is necessary for a blockade? We are not given anywhere. So now this is a shift which very few people notice, that passage was talking about what is necessary for an embargo. Here it's talking about what is necessary for a blockade. But in your mind, the mind doesn't register, okay, now it has shifted to a blockade. So it's a comprehension problem. And then you find options close. Okay, I'm not saying that you found this option close, but because there is another reason why this is wrong. A lot of time, people just don't notice these shifts and end up finding options close. They end up becoming confused in the last two options without realizing they're not even reading correctly. Okay, so option D is the only answer here. Any questions, doubts on this question?
इन ऑप्शन भी अगर वो यूनानिमस नहीं होता एंड इट वुड हैव बीन हाई डिग्री। हाई डिग्री तो सही होता वो। तभी तो गलत होता, अभी तो बात करी हमने कि ब्लॉकेड की बात कर रहा हूँ। ब्लॉकेड के लिए क्या नेसेसरी है, ये कहाँ दिया हुआ है? ब्लॉकेड के लिए क्या नेसेसरी है? आर बी गिवन दैट? लास्ट वाला सेंटेंस वो नहीं कह रहा है, isn't it saying that a total blockade or blockade is necessary for an embargo? कि हाँ उल्टा दिया है। तो ब्लॉकेड एम्बार्गो के लिए नेसेसरी है, ब्लॉकेड के लिए क्या नेसेसरी है? दिया यहाँ हुआ? वो नहीं वो नहीं दिया। या क्लियर? Yes it is, yeah. चलो लेट्स मूव ऑन। So this is an official passage. The question is मतलब entirely by me. वो तो आप देख के पता लग ही जाएगा। हाँ, ठीक है। So again, here are four options. Let me launch the poll. So take 3 minutes or so. Okay, going to end the poll. Okay, great. All 5 of you have participated.
So, well, the main essentially thing that you need to understand to answer this question is the meaning of this statement. Anyone, any of you had any difficulty understanding this statement? If you had a difficulty, say yes. If you didn't have a difficulty understanding this, say no. What about others? Did you have difficulty understanding the last statement, which is the conclusion? ठीक है. कोई बात नहीं. So we'll come back to this. Pehle, let's talk about the unless hack. So I'll give you a hack. Generally, I'm not very fond of giving hacks, but I discovered it, and I now at times I use it very directly. And I think it's quite helpful. So I'll share it with you. So unless X happens, let's talk about this statement. Unless X happens, Y will not happen. What is the meaning of this statement? Anybody? What एक्स is the, नहीं तो क्या? फिर क्या बोल वाई भी नहीं होगा. अगर X नहीं हुआ तो Y नहीं होगा. Yes. Right? Yes. तो मतलब X is necessary for Y. Right? या फिर जैसे आपने बोला कि if X नहीं होगा तो Y नहीं होगा. Right? Yes. Yes. तो आपने इसको X necessary for Y के टर्म्स में सोचा था? नहीं. नहीं मैंने स्टैम्प पे नहीं सोचा था. ओके, ठीक है. तो इसका मतलब इट्स जस्ट कि X is necessary for Y, या फिर अगर X नहीं होगा as you are saying तो Y नहीं होगा. और अगर स्टेटमेंट हो हमारे पास सिमिलरली इफ अनलेस X happens Y will happen, ऐसा भी हो सकता है. तो इसका मतलब होता है अगर X नहीं होगा तो Y होगा ही होगा. Okay, so for example, unless you pass the exam, you will be rejected. Okay, so if you don't pass the exam, you will be rejected. That is the meaning. Okay. So if you observe these two equivalent statements, you will see that the baad wala part remains the same. इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए if में the only thing is this part undergoes a change, which is it becomes the exact opposite. So unless X happens becomes X doesn't happen, and everything else remains same, and you have a if. Okay, because a lot of times I see people struggle with these kind of statements. I myself have struggled with such statements. Unless this happens. So in complex context, it becomes difficult to wrap my head around it. So this is a hack that I have sort of come across as I was trying to understand. I realized that this always works. You can transform any unless statement into an if then statement by going through this route. So the then part remains the same, unless part becomes the opposite. So for example, unless you give me a banana, I'll not give you an apple. If you transform it into an if statement, it becomes, if you don't give me a banana, I'll not give you an apple. Unless you give me a hug, I'll give you a punch. That's a quite violent way to get a hug. But so it means if you don't give me a hug, I'll give you a punch. Okay, so again, the unless part changes. And again, of course, it's a hack, but if you understand it, then it's not a hack. The only difference between a trick and an application of a concept is when you are applying a concept, then also you may be using some very time-saving ways to solve a question.
The only thing is that you understand what you're doing. When you're using a trick, you don't understand what you're doing. But if you understand why unless X happens, Y will not happen, why it means this, then it's not really a hack. Then you really understand where it is coming from. But then in any context, you can just apply it directly. Okay. Once you understand it, then you can just go on to directly apply it. For example, unless Buddies expands into a new market segment, it too is likely to go out of business. So isko if then mein karenge to what will we have? Anybody? How will we make it into if then? If Buddy does not expand into a market segment, it is likely to go out of business. हाँ, तो बाकी everything remains the same. It's just that if Buddies does not expand हो जाएगा, right? तो लास्ट स्टेटमेंट का मतलब था अगर वो एक्सपैंड नहीं करेगा तो इट इज गोइंग टू गो आउट ऑफ बिजनेस, राइट? इसको अगर हम वी थिंक इन टर्म्स ऑफ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, एसेंशियली इट्स सेइंग एक्सपैंडिंग इनटू अ न्यू मार्केट सेगमेंट इज नेसेसरी टू स्टे इन बिजनेस, राइट? या विरू? Just one question out here. So let's say if it does, we still do not know what is the outcome, right? मतलब in तीनों sentence में. So let's say I give a banana. I'm not very sure whether I'll get an apple. Is that a correct understanding? Like from continuing हाँ, from वो करेक्ट सही करेक्ट, है हाँ ठीक है नेसेसरी है, वो कह रहे हैं नेसेसरी है, तो नहीं दोगे बनाना फिर तो नहीं मिलेगा, दोगे तो पता नहीं क्या होगा। तो पता नहीं है हाँ ठीक है चलेगा हाँ वही आई वाज जस्ट वांटेड टू मेक श्योर ओके करेक्ट, ठीक है। Anybody, any doubts on this slide? We are going to use this understanding to solve the previous question. Okay, now let's go back to the previous slide. Now let's look at this statement. So this statement का मतलब we have already discussed. इसका मतलब है कि if Buddies does not expand, it will go out of it too is likely to go out of business, right? So it's going to go out of मतलब it's likely to go out of business if it doesn't expand, which is what option A is saying, right? ठीक है, which is what option A is saying. तो definitely ये तो correct ही है, क्योंकि again as we said इसका मतलब ही ये if Buddy does not expand it is likely to go out of business, which is what this is saying. If it doesn't expand it will go out of business. It is even stronger. Let's look at option B. If it doesn't expand, it will stay in business. This is exactly opposite of what we want. So this is out. Option C, if it expands, हमारा conclusion था if it doesn't expand, it is likely to go out of business. Now it is talking about a situation in which it expands. But our conclusion is not saying anything about what if it expands. You understand? The conclusion is about अगर expand नहीं होता तो out of business जाएगा, which means expansion is a necessary condition to stay in business. But if it expands, what happens? We are not saying necessary है, sufficient तो किसी ने नहीं बोला. So this is not going to strengthen. And similarly, this is also not going to strengthen because it's saying कि expand करने के बाद क्या होगा? Our conclusion was कि अगर expand नहीं होगा तो क्या होगा? The conclusion was never about कि expand करने से क्या होने वाला है. Expand करने के बाद भी it may go out of business. We are not concerned because we are just saying it's necessary. We are not saying it's sufficient. Yeah, Virupi. so this is like from a strengthened perspective I think ठीक है what can if let's say if ये question inference होता can we infer A based on नहीं the infer last statement था ना, क्योंकि वो तो likely बोल रहा है. but isn't likely indicates a higher probability and because यहाँ पे will so like the as I said even in the chat I was confused with the term buddies will go out of business
and I was trying to correlate with the term likely to go out of business, wherein Will sort of talks about a sure shot, a probability, like an event which happens with probability one, Correct. versus likely just says it's more than 50%. Meko, I think that's where I was a little kind of shaky about from an inference standpoint, how does likely translate to will? नहीं नहीं, इन्फ्लुएंस तो नहीं हो पाएगा. अगर आपको कोई कहे मोर देन 50% है तो यू कैन नॉट इन्फर के 100% है, Agree, yeah. राइट. बट अगर आपको कोई है ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद वो 100% है, तो आपका बिलीफ बढ़ रहा है कि हाँ यार फिर 50 से तो ऊपर है ही है. Right, right. No, no, I totally get from a strengthened perspective. This makes sense, but Yeah. I'm coming towards कि अगर ये question inference होता, if like which of the following फिर नहीं. statements can be inferred, तो नहीं infer. ठीक Yeah, है, okay. कोई नहीं. C is not strengthening, Manvi, as I said. Essentially, if you look at C, it is saying expansion is enough to stay in business, right? Ki wo stay in business if it expands. So essentially, it's saying ki expansion is enough. But what we are trying to, the conclusion is it is necessary. And we have discussed in the last session, saying that something is sufficient doesn't strengthen that it is necessary. Kahan gayi wo slide? Here. Yeah, so saying this does not indicate a necessary part. अगर कोई sufficient है, it does not strengthen that it is necessary. Life में भी यार बहुत सारी चीजें sufficient हो सकती हैं आपके लिए. Let's say you win a Nobel Prize, then you will get into Harvard, but that is not necessary at all, and that does not even indicate कि Nobel Prize किसी के लिए necessary है. Understood, sir. और साथ में इसी को दूसरे तरीके से देखने का ये है कि वो कह रहा है कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, कि अगर नहीं करोगे एक्सपैंड तो ये होगा, अगर करोगे एक्सपैंड तो क्या होगा, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहा है, राइट? Yes, sir. So, sir, expanding has two probabilities. Like it might stay, it might not stay. Like we don't know. हाँ, उसने खुद ही ओपन छोड़ा हुआ है कि एक्सपैंड करने के बाद भी क्या पता आउट ऑफ बिजनेस चला जाए या इट स्टेज इन बिजनेस. तो क्योंकि वो खुद ही ओपन है, ही इज नॉट मेकिंग एनी कमेंट अबाउट दैट, तो वी कैन नॉट स्ट्रेंथन हिज स्टेटमेंट बाय सेइंग एनीथिंग अबाउट कि एक्सपैंड करने के बाद क्या होगा. Okay. Yeah. Yes, sir. हमें ये करना है कि बेसिकली कि हाँ नेसेसरी है, वी हैव टू सपोर्ट द नेसेसरी पार्ट, कि अगर एक्सपैंड नहीं करता फिर तो पक्का आउट ऑफ बिजनेस जाएगा. तो लेट्स से इफ देयर इज एन ऑप्शन दैट एलिमिनेट्स अ पॉसिबिलिटी की दैट इट कैन स्टे इन बिजनेस विदाउट एक्सपेंशन, अगर वो एलिमिनेट करते हैं तो दैट वुड स्ट्रेंथन. या वीकन करने का तरीका है बाय सजेस्टिंग अ वे कि इट कैन स्टे इन बिजनेस विदाउट एक्सपेंडिंग. ओके. Yeah. So, sir, A is strengthening, but A cannot be inferred. हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. मेक सेंस? Yeah. Yes, sir. It's clear now. अदर्स? अविरूप, अमन, मानवी, प्रियम, सॉरी मानवी तो हो गया. विरूप, अमन, प्रियम, अमनप्रीत. ठीक है. So chalo, we are left with just one slide now. So there is no option here. So you just need to think about it. What do you need to indicate to strengthen the above argument? I think given our discussion so far, it should not be very hard. Mhm.
So Manvi, you have written a couple of statements. What do you need to indicate to strengthen? Sir, I weakened it. बट मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्या वो लिखा है. स्ट्रेंथन वीकन तो बात की बात है. I think I was finding gaps between the premise and the conclusion which is given. अच्छा अच्छा, देखो पहले तो कंक्लूजन समझना जरूरी है, वो तो बात की बात है. गैप्स तो बेसिकली द कंक्लूजन इज दिस, which is that as we have discussed, it means this: if a record of a company does not start up, that area will not break its record. आप यहाँ पे if it is this idea is easy for you to handle, तो आप इसी को डायरेक्टली सोच सकते हो इसको मुझे स्ट्रेंथन करना है. बट फॉर मी दिस आइडिया इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स. देखो व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन और वीकन, पहली बात तो जिसको स्ट्रेंथन वीकन करना है दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड, अदरवाइज यू विल गो ऑफ इन द ऑप्शंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है कि आइडिया हैज टू बी क्लियर कि जब उसको ऑप्शन से कनेक्ट करने जा रहे हो देन यू डोंट बिकम लॉस्ट. इफ द आइडियाज इज आल्सो लिटिल शेकी, then the option brings in additional complexity, you will go off. You will not even realize that you've gone off. So it is very important the idea is very clear. So that's why I try to simplify the ideas as much as possible in my mind before even evaluating the options. So if I even if I understand कि इसका मतलब ये है, I will still not be very comfortable. If a record मुझे इसको strengthen करना है कि record कंपनी start नहीं हुई तो डेटा का break नहीं होगा record. अच्छा, इसको strengthen करना है. Again, my mind doesn't function right now also.
तो मैं इसको पहले ऐसे सोचूंगा, अच्छा ये कह रहा है कि स्टार्टिंग अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनीज इज नेसेसरी टू ब्रेक दैट एरियाज रिकॉर्ड। अच्छा, ये ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर कंपनीज नेसेसरी हैं रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए न्यू जॉब्स का। अच्छा, इसको स्ट्रेंथन करना। ऑफ कोर्स देयर इज रीजनिंग गिवन कि क्यों नेसेसरी है, क्योंकि पुरानी कंपनीज ने तो ऐड करनी नहीं है, तो नई कंपनीज के ऊपर ही बोझ आएगा, राइट? दैट आई अंडरस्टैंड। So once I understand it this way, now it is easier for me to handle. So this is the choice you have. Once you understand कि हम necessary को इस statement को ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, now it's a choice you have, whatever is comfortable to you. I'm not saying कि you go this route only. I'm just saying this is easier for me. But the point is, if you have options, then you can pick whatever is most comfortable in a given scenario. तो मेरे लिए होगा कि अच्छा, once I understand कैसे ये कह रहा है कि starting is necessary to break the record. इसको स्ट्रेंथन करना, तो मतलब आई हैव टू से कि कोई और तरीका नहीं है रिकॉर्ड ब्रेक करने का, ये जरूरी है, स्टार्ट होनी ही पड़ेंगे रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनीज। सो दिस इज द वे टू स्ट्रेंथन। सो दिस इज what I'll have in mind as I go to the options. तो जैसे अभिरूप कह रहा था, statement that tells us new companies always add new jobs, that is not going to strengthen. वो तब स्ट्रेंथन करता अगर वो सफिशिएंट कंडीशन बोल रहा होता कि अगर रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनी स्टार्ट होंगी तो डरिए अगर रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, और आप आके बोलते हैं हाँ यार कंपनीज हमेशा नई जॉब्स ऐड करती हैं, तो सही है, फिर रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनी स्टार्ट करो, उससे रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। If the conclusion were a sufficient condition, then what Abhirup is saying, okay, you don't see Abhirup's statement, let me just copy paste it here. Okay. So this is, sorry, मैंने Abhirup को direct message कर दिया. So this is what Abhirup is saying, that statement that tells us new companies always add new jobs. This is not going to strengthen this argument. हमें necessary condition को strengthen करना है. This statement में strengthen a sufficient condition. हमें स्ट्रेंथन करना है कि ये नेसेसरी है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनीज तो स्टार्ट होनी ही पड़ेंगी, इसके बिना रिकॉर्ड नंबर ऑफ जॉब्स नहीं हो पाएंगी। रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद क्या होगा, दैट इज नॉट द कंसर्न। अगर रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनी स्टार्ट नहीं हुई, उसके बिना भी रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए, दैट विल वीकन द आर्गुमेंट। तो वी हैव टू एलिमिनेट दो सिनेरियोस कि नहीं बिना रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। तो इफ देयर इज अनदर वे to break the record of jobs without creating a record number of companies, that would weaken. So eliminating that scenario, for example, अगर आप बोल दो कि यार नहीं कंपनीज थोड़ी होंगी, बट लेट्स से हर कंपनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट करेंगी पर कंपनी, okay, so there has to be a significantly higher number of jobs per company. If every company creates, then you don't need a record number of companies, right? Or you say कि government बहुत additional jobs create करेगी, that would also weaken. So if you say नहीं government कोई additional job नहीं create करने वाली, that will strengthen. So you're essentially eliminating other ways to create a record number of jobs. That is how you're going to strengthen की necessary है. Yeah, Virup. CJ, I get, like, what is kind of, indicated in the slide. The question that I had with respect to the statement that I said, and I was kind of thinking it from from a superlative standpoint, कि अगर हमको पता ही ये बताया गया, again I don't know what these options were, but let's say अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता जहाँ पे ये बोला जाता कि वो sufficient है, wouldn't it kind of give that sure shot guarantee कि like for example a statement like this, that any new job created
always adds any new company created always adds job in the place of blah blah or something around like that, right? तो wouldn't it give a sure shot indication कि हाँ नई कंपनीज आएंगी तो जॉब्स क्रिएट होगा ही? करेक्ट, वो ये शॉर्ट शॉर्ट इंडिकेशन देगा। वो तो आप बोल ही रहे हो, तो वो इंडिकेशन तो आ ही रहा है। फिर Oh, okay. No, no, no. When I post said I'm thinking about it. हाँ, but in the conclusion here is अगर वो नहीं किया तो नहीं होगा. That part I believe is still not taken care of. करेक्ट, वेरी गुड। Yes. Okay. Okay. यही दिमाग में शिफ्ट होते हैं। आप कह रहे हैं हाँ यार बोल तो दिया मैंने, अब तो स्ट्रेंथन हो गया, पर आपने किसको स्ट्रेंथन किया है? नाउ यू फॉरगॉट। हमें तो कंक्लूजन को स्ट्रेंथन करना था, विच इज की नेसेसरी है। आप Hmm. किसी और को स्ट्रेंथन करने निकल गए, हाँ मेरी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, बट वो तो कंक्लूजन नहीं था। दैट इज द प्रॉब्लम, वो शिफ्ट आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई सेड इन द लास्ट सेशन कि द स्टेटमेंट्स आर अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, एक्स इज नेसेसरी फॉर वाई। सो द रीजन अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल इज कि जब वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके बाद उनके दिमाग में वाई रह जाता है, एक्स भूल जाते हैं। तो आप वाई को स्ट्रेंथन करने निकल पड़े हो कि है मेरी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, बट द स्टेटमेंट वाज एक्स इज नेसेसरी फॉर वाई। स्ट्रेंथनिंग की वाई होगा इज नॉट गोइंग टू स्ट्रेंथन दिस स्टेटमेंट की एक्स इज नेसेसरी फॉर वाई। मेक सेंस? Yes, it does. Yeah. और कुछ? Any other doubts, questions? Yes, Manvi. So the statements I wrote, so I was just thinking about there's no other way that the like more jobs are created in the economy. So that's why I wrote that the second statement, a few companies may be required. So like the statement is saying a record number of companies start up this year. Maybe like 2 companies are created and like per company the number of jobs are very high. Yeah. So that is the second statement which I wrote, and the first is that the companies that got created last year, so they are not adding a substantial number of jobs. दिया ही हुआ है ना, वो तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है ना, प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज आर नॉट एडिंग। नहीं, Maybe they are adding more than the new companies that will be set up. तो दिया will not be adding as many new jobs as such companies added। क्या मतलब किससे ज्यादा करेंगे? तो जो नई क्रिएट होंगी उससे क्या हो जाएगा? I think the first is invalid. It's the second statement. टोटल नंबर ऑफ कंपनी, जब टोटल नंबर ऑफ जॉब्स जो ऐड होती हैं उसको प्रीवियसली वाली ऐड करती हैं और न्यू कंपनीज ऐड करती हैं, राइट? Yeah. तो हम कह रहे हैं कि, और ये लेट्स से लास्ट ईयर के लिए है और अब करंट ईयर के लिए ये है, तो हम कह रहे हैं जो पीसी है ये पीएल से कम है, राइट? तो नेचुरली अब एनसी हैज टू बी ग्रेटर देन एनएल, तभी टीसी टीएल से बड़ा हो पाएगा, राइट? Yes, sir. ये हमारा आर्गुमेंट है। अब आप कंपैरिजन में चले गए इन दोनों के कि जो प्रीवियसली हैं वो नई से ज्यादा ऐड कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज ये इससे कम है, इनको होना ही पड़ेगा, राइट? Yeah, yes, sir. तो लेट्स से अगर पीएल 10,000 थी और एनएल 100 थी और अब इस साल ये 99,190 रह गई, तो अब ये वाला जो नंबर है ये 10 का डिफरेंस उसको कंपोजिट करना ही पड़ेगा, राइट? Yeah, perfect. इन दोनों का कंपैरिजन आपस में इज नॉट रेलेवेंट यार।
Yeah, man. Thank you, sir. यस सर। तो द जो मैंने पिछले एग्जाम्पल को देखा था, तो इफ स्टेटमेंट्स कैन आल्सो बी अ स्ट्रेंथनर इफ गिवन एज अ चॉइस। जैसे हमने ये इसको इन्वर्स करा था ना, अनलेस स्टेटमेंट को कि उसका फर्स्ट पार्ट को इन्वर्स कर देते हैं, सेकंड पार्ट को वैसा कैसे ही छोड़ देते हैं। तो मैंने जो स्टेटमेंट 1 लिखी हुई है, इफ रिकॉर्ड कंपनीज डोंट स्टार्ट, Yeah. नो न्यू जॉब रिकॉर्ड्स विल हैपन। Yeah. तो अगर ये चॉइस होती आंसर चॉइसेस में एक, तो दिस वुड हैव बीन अ स्ट्रेंथनर। Yeah. Yeah. ये कर सकते हैं हम। ओके। और सर सेकेंडली, जैसे जब नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, तो Correct. हमने एक तो हमने निकाला था कि इफ एक्स डज नॉट हैपन, वाई विल नॉट हैपन। Correct. तो एक और भी हमने कल देखा था कि इफ वाई हैपेंड, एक्स मस्ट हैव आल्सो हैपेंड। Correct. क्योंकि necessary था X. राइट। तो उसको ही मैं अगर इस सिनारियो में अप्लाई करूं, तो जो अगर मैंने सेकंड जो लिखी है स्टेटमेंट, तो इज दैट वैलिड कि इफ वाई हो गया नो न्यू जॉब रिकॉर्ड, और एक्स हो गया देन रिकॉर्ड कंपनीज डिडंट स्टार्ट। नहीं, उल्टा कर रहा हो। हाँ, तो आप कंफ्यूज हो गया अब उसमें। आपको ये बोलना चाहिए कि अगर जॉब्स का रिकॉर्ड बन चुका है तो फिर रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनी स्टार्ट हुई होंगी, क्योंकि अच्छा। वो ओके। पर ये तो आप फिर फ्यूचर में जाके पास की बातें कर रहे हो, विच इज ऑकवर्ड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। हम वहां से फ्यूचर की बात करें और फ्यूचर पे जाके कह रहे हो कि हाँ रिकॉर्ड तो हो गई हैं, अब रिकॉर्ड कंपनी से स्टार्ट हुई होंगी। वो आप लॉजिकली जो बात कर रहे हो ठीक है, बट मतलब कॉमन सेंसिकली कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठ पा रहा हो। वो इस सिनेरियो में एप्लीकेबल नहीं है टू स्ट्रेंथन। रियल लाइफ आपको सोचना पड़ेगा ना। रियल लाइफ में तो वो कह रहा है फ्यूचर में ये होगा तो ये होगा, आप कह रहे हो कि अच्छा अच्छा अगर ये हो जाता तो फिर ये हुआ होता, राइट? राइट। हम्म। मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो लेट से अगर मैंने डेटा देखा है, तो इफ न्यू जॉब क्रिएशन का रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आई कैन नॉट से दैट रिकॉर्ड कंपनीज डिडंट स्टार्ट। मतलब बेस्ड ऑन जस्ट द हाँ, डेटा ऑफ न्यू जॉब क्रिएशंस, क्या मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि फिर रिकॉर्ड कंपनीज डिडंट स्टार्ट? नहीं कर सकते ना, वो तो वैसे भी नेसेसरी कह रहा है। हम्म। तो अगर वो नहीं हुआ है, आउटकम डजंट मीन कि नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, हो सकता है हो गई हो उसके बाद भी ना हो, ओके। राइट? पर ये अगेन बार बार आप इन्फ्लुएंस माइंडसेट लगा रहे हो इसके ऊपर, ओके। ठीक है, विच इज फाइन। आप अभी बिकॉज यू आर sort of in the beginning stages of understanding this, हम्म। तो यही है कि स्टेटमेंट का मतलब समझ आ गया कि अच्छा ये कह रहे हैं नेसेसरी है तो मुझे नेसेसरी को स्ट्रेंथन करना है, बस बात खत्म होगी उतने पे। ओके। ओके। ठीक है। Yep. अच्छा, एक और चीज, yesterday when you guys, oh sorry, not just guys, we have Manvi also here. So when you all exited the meeting, did you get a survey link? Yes, no, or No, I don't suppose. nothing I open in your browser, nothing? नहीं सर, नहीं है। वही मुझे लगा, आई थॉट वो करेगा, वो नहीं कर रहा था। ओके। आपसे 2 ईमेल आए थे बस, but then हाँ, नहीं, I thought Zoom would automatically initiate that survey, but right now I pasted the link. Nobody filled that up. मैं like एक टाइम क्यों नहीं भरा? Then I realized कि then I had a doubt कि शायद वो survey किया ही नहीं होगा. I thought Zoom would automatically send that survey post the end of that meeting. So this is the link. You can share your thoughts on this link. But in any case, if you have any doubts, any questions, we are at the end of this session. You can reach out to me on, or you can see my content on these links. So if you have any doubts, any questions regarding anything we have covered, you can ask. And also, since you all have attended both the sessions, and I'm glad you did that. So if you guys, or sorry, I'm just in a habit of saying that. So if you have any doubts
after you go through the recordings, you can again send me over email. I'll try to reply it as soon as I can. Okay, but first go through the recordings because that will solidify your understanding of the content. Yeah, Viru. Since I had just one kind of question from a process standpoint that you follow or you recommend people follow. So there are two ways kind of I uh, have done so far in approaching CR questions. One is wherein I read the passage, I try to understand what the flow is, what the conclusion is, try to identify how the author is coming to the conclusion, so on and so forth. But I don't really uh, kind of pre-think or pre-predict what could be, because sometimes I saw that it works, sometimes I just end up wasting time or it just confuses me. And the second way is like I just read, I do a mind map and then go to the options to with a very open mind on any possibility per se. Uh, like, do you recommend one approach over other? Do you think uh, kind of uh, spending a little more time before one dives into the option helps? I'm just trying to understand. Like for example, in this question, the one that we just discussed, आपने पहले पढ़ा, आपने मतलब आपने negate करके या जो भी है, there is no way ये वाला, and then maybe I don't know if you were trying to find a option, अगर options होता तो आप क्या ये ढूंढते कि कौन सा option ये कह रहा है there is no way, या आप you would have just gone ahead and also looked out for other possibilities. I'm just trying to understand the method that you recommend one follows in solving CR questions. This is the only possibility to stand on this. Because मैंने कोई possibilities में गया ही नहीं हूँ. I've just understood the meaning of the statement. I'm just saying कि अच्छा statement का मतलब है this is necessary for this. तो उसको naturally अगर हम बोलेंगे कि नहीं necessary है तो that will weaken. और मैं कुछ मैंने केस नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल स्टेटमेंट को उल्टा बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट बोलिए नेसेसरी है एंड आई एम सेइंग दिस इज नॉट नेसेसरी, दैट विल वीकन, राइट. उसको एलिमिनेट कर दूंगा कि नहीं नहीं कोई और तरीका नहीं है, नेसेसरी ही है. कोई और तरीका नहीं है का मतलब ही नेसेसरी है, राइट, कि इससे निकल के ही जाना पड़ेगा. तो आई एम नॉट क्रिएटिंग अ सेपरेट केस, आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट. दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज डू. जो आप कह रहे हो प्री थिंकिंग, दैट यू थिंक ऑफ स्पेसिफिक वेज टू स्ट्रेंथन और वीकन, दैट इज एंटायरली ऑप्शनल. ठीक है. और रेदर एज यू आर सेइंग कि कई लोगों के लिए इट इज आल्सो डिसएडवांटेजेस बिकॉज दे बिकम बायस्ड, they become Okay. narrow in their thinking when they approach the options. Okay. So pre-thinking, as far as I understand, जो बाकी courses में करते हैं, this is not done rigorously, or this is done in a very, I would say, very superficial way. In GMAT intensive, we focus a lot on this in a very, I would say, gap analysis, something that Anish and I have sort of come up with on our own. This is not done anywhere else, at least in my understanding. This was an insight for me. This was an insight for Anish also. So we do that very rigorously and in a very systematic manner, in a detailed manner. That process also is equivalent to thinking about various gaps in the options before looking at the options. But in that case, but us case may we do it, that's a skill building process, not something that we expect people to do it in the exam. Some people may choose to do in the exam also. ठीक है. But that is mainly for skill building. कि अगर आप gap analysis का मतलब ये है कि आपने ये आर्गुमेंट पढ़ा, फिर आप सोच रहे हो क्या क्या कमियां हैं, तो आप कह रहे हो कि आप बस एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग लेके चले जाते हो, रिमेनिंग ओपन. तो एक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो कमियां स्टोर्ड हैं. सो यू नो व्हेन यू कम अक्रॉस अ वीक नॉट स्ट्रेंथ, योर माइंड ऑटोमेटिकली क्लिक्स, राइट, कि हाँ इस तरीके से कर सकते हैं, राइट. Right. तो हमारे में क्या हो रहा है, वी आर डेलिबरेटली कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट वेरियस पॉसिबिलिटीज दैट एनहांसेस योर स्किल्स. कि जो पॉसिबिलिटी शायद आपके सबकॉन्शियस में इतनी क्लियरली नहीं भी होंगी, व्हेन यू मेक इट कॉन्शियस, नाउ दीज आर क्लियर.
So that's a skill building process, not a question solving process as such. Skill building का मतलब है कि आप critical thinking skills बढ़ा रहे हो. Okay. तो जब आप अपनी thinking skills इतनी बढ़ा लो, so that by the time you actually sit for the exam, अब वो subconscious का part है आपकी skills. You're not doing that gap analysis. You don't even need to do that, क्योंकि वो तो नहीं कि skill building का process था. तो अब जब आप options evaluate करते हो तो वहाँ पे you are able to, your mind subconsciously makes those connections. That is the intent. जो pre-thinking I see कुछ courses करते हैं, I will not name that courses, वो बहुत बारी these are about spotting the exact option जो already answer में है. Agree, yeah. तो वो मैंने कई लोगों से सुना है that works against that. True, okay. Makes sense, yeah. ठीक है. Thank you, yeah. Thank you for this answer. Cool. और कुछ? Seem to be done. Please take out some time to fill this survey, this link I have shared. Okay, cool. It was great talking to you over both of these 2 days. Thank you so much. I think time to go. Thank you, CJ. Yeah. Thank you for the session. Great. Thank you. Good night. Take care. Bye-bye.